अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार, वेरी गुड ईवनिंग। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर वीक माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हुंदे हां, जिथे असीं हर हफ्ते कोई ना कोई डॉक्टर जिहड़ा कि स्पैशलिस्ट हुंदा, कनेडियन या अमेरिकन लाइसेंस्ड हुंदा, उन्हां नूं लैके आउंदे हां ते एक पर्टिकुलर हैल्थ इशू दे नाल असीं डिटेल दे विच तुहाडे नाल डिस्कस करदे हां। लास्ट वीक असीं डिप्रैशन दे उत्ते गल कीती सी, डॉक्टर अंकुश गोयल मेरे नाल सी ते असीं डिप्रैशन दा बड़ा डिटेल दे विच कीता सी कि डिप्रैशन कहंदे किहनूं ने, स्ट्रैस ते डिप्रैशन च की फर्क है, क्योंकि सानूं बड़ा कई बारी मिसअंडरस्टैंडिंग है भी जे एक अद्धा दिन कोई गल होगी तो असीं कहने भी डिप्रैशन च हो गए। उन्होंने दस्सिया सी कि डिप्रैशन एक अद्धे दिन नहीं हुंदा, जे कंटीन्यूसली साडा जिहड़ा मूड है लॉन्ग टाइम रहे 6 वीक 7 वीक 8 वीक फिर उन्होंने डिप्रैशन कह रहे हैं। तो वह दस्सिया सी भी इहदा हल भी की है, मैਡੀਸਨ की है तो की इहदा परपज़ हुंदा है ते साइकोलॉजिकल ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BNC ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? BNC ਐਕਚੁਅਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੋਡਸ ਨੇ, बड़िया पॉपुलर रोड्स ने, एक नूं असीं ब्रैमली कहने ते दूसरी नूं असीं कंट्री साइड कहने। B मीनस ब्रैमली, C मीनस कंट्री साइड, दोनों नूं मिला के ब्रैमली ते कंट्री साइड नूं मिला के इस मैडिकल क्लीनिक का नाम BNC मैडिकल सेंटर रखा गया है। तुसी जिमें कि हुण तुहानूं भली भांत पता लग गया होगा कि ये जिहड़ा मैडिकल सेंटर है फर्स्ट टाइम इन ब्रैम्पटन, मिसीसागा, इटोबिको, टोरंटो, यू नेम इट, इवन ओकविल एंड ऑरेंजविल, ये फर्स्ट टाइम है जिहदे विच अंडर द सेम रूफ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਲਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, 2 ਮੇਲ ਨੇ 2 ਫੀਮੇਲ ਨੇ, 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨਸ ਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਤਾਮਿਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ फार्मेसी है IDA फार्मेसी, जिहदे विच 365 ਦੇ 365 दिन ये जिहड़ी फार्मेसी है तो अर्जेंट केयर खुलदा है। फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आई डॉक्टर्स ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, फर्स्ट टाइम 4 आई डॉक्टर ने, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ, ਸੁਸਾਈਡਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਫੈਨੀ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ MD ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BNC ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 8 o'clock ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਤੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 770 ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਬੋਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਗਰਲ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ।
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ I can't pronounce it proper, she can correct me. Anoweshi, that is her name. So first of all I want to welcome her. Welcome Anoweshi, and you can correct me if I pronounce the right name or not. ठीक नाम ले रहे हैं, Anowesh. Okay, Anowesh. So क्योंकि हम तो बुजुर्ग हैं, हमें नहीं सुनाई पता, हमारे टाइम पर तो ऐसे नाम नहीं होते थे, लेकिन I was little bit confused, but anyway 80-90% I pronounce it right. So Anoweshi, can you tell me something about yourself, that how long you been in Canada and what is the purpose of to come in Canada, and what is your background about your education? You can, don't feel hesitate, tell in a plain simple English, Hindi, Urdu, any language. Okay, I moved to Canada 1 year back. 2017 November में मैं Canada आई थी, all by myself. मेरी family is still back home इस्लामाबाद में. मैंने masters किया हुआ है international relations में, and prior to that I did my BBA. Canada आने का purpose family support था, and to avail those opportunities जो हमें third world countries में या अपनी home countries में नहीं मिलती. So that was the prime aim of coming to Canada. So right now I think you are working with some car company, and can you tell me something about that? Yes, I am currently working at an entry-level position as a receptionist with Mercedes-Benz corporate stores. So I just started like 6 months back, and people tell me that it's not up to my potential, but I believe कि यहाँ पे आने के लिए, because since I don't have the Canadian experience, तो entry-level position अच्छी company में is a good startup. 5 years from now, I do see myself progressing in the same company because it promises me future, it promises me growth. So I don't mind sticking to the company. So can you tell me that, so for my knowledge is concerned, in Brampton and Mississauga, there are two Mercedes dealerships. I think you are working with Brampton or Mississauga? Mississauga. So you are working in Mississauga. Yeah. Okay. I know that you are working as a receptionist, and I should not ask you a technical question. Sure. But just basic question. Okay. Like as a layman, or maybe you have the knowledge in Pakistan too, there are so many cars. Like, what is the difference between, sometimes the people say I need sedan, and sometimes the people say I need two-door. Okay. Right? And can you first tell me, as I told, it's a very simple question. For a layman, I believe two-door का concept that is more for like youth, sporty लोग के लिए, ठीक है, थोड़े शशके के लिए, show off के लिए, young blood के लिए, they want two-door cars, right? And especially it is associated with boys because they are into car racing. तो वो two-door गाड़ी उनको तब चाहिए होती, कोई इतना like it's not a rocket science. Sedan is a normal car, like a normal four-door car, family car है, छोटी four-seater है, four to five people. That is a normal definition of a sedan. तो मैंने एक बार सुना था क्योंकि कुछ यंग बच्चों से कि वो जो टीनेजर हैं या यंग बच्चे हैं 30s में, वो दे डोंट लाइक, इन आवर एज वी प्रेफर ऑलवेज SUV, लाइक वो जो ऊंची होती है ना, उसको भी बोलते हैं ना, जो सीडान है वो बेसिक कार है नहीं है. लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब आप सीडान में या टू डोर में तो हम कभी बैठेंगे नहीं, क्योंकि हमें भी अपनी लाइफ प्यारी है, वो तो बच्चे सोचते हैं. जब फोर डोर में सीडान में बैठते हैं तो जब उसमें बैठना भी मुश्किल है, वापस निकलना भी मुश्किल है हमारे लिए. लेकिन जो हमारी SUV होती है वो उसकी हाइट ज़्यादा होती है, इट्स ईजी टू गो इन एंड गो आउट. पर जो बच्चे लोग हैं, वो बच्चे लोग मीन नॉट ऑफ कोर्स आफ्टर 20th और आप, तो वो दे डोंट लाइक दैट SUV, वो कहते हैं ये बूढ़ों की कार है ना. तो व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दिस? ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हम लोगों में, लाइक हम जो साउथ एशियंस हैं, इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंटल जो जनरेशन है, हमारे साथ ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा है. बेसिकली द पर्पस ऑफ SUV लिविंग इन कैनेडा इज़ कि आपको वो विंटर के लिए SUVs मैंडेटरी बन जाती हैं. प्लस एज वी हैव लाइक बिग फैमिलीज, 5 members of families, 6 members of families, तो वो 6-7 सीटर आप सेडान नहीं आपको मिलेगी 6-7 सीटर, ठीक है. सो फॉर दैट यू हैव टू मूव टू एन SUV अल्टीमेटली. तो अगर 20-30 में बच्चे हैं, ठीक है, उनकी अभी फैमिलीज नहीं है, तो वो सेडान पे और टू डोर पे खुश रहेंगे. द मोमेंट दे क्रॉस 30s and they have bigger families, they don't have choice but to go for an SUV ultimately. Okay, can I ask you a personal question? Like, still you're working on the reception, at least, reception is the window of any company. So you know that, so like in Mississauga, average, how many you sell the Mercedes? Doesn't matter whether it's a 2-door, 4-door or SUV, roughly. Honestly, it depends. Like normally, जो holiday season होता है November, December onwards, and November till I think February is the slow season. So we don't have like a fixed number कि हम कितनी
जितनी cars monthly sell कर रहे हैं, but like winter time is normally the slow season. We're not making much money, not selling much cars, but summer time is like the busy time. So you have any idea roughly that in a day you will sell 5, 10, 20, 100, 500? Honestly, I have no idea. Maybe like there have been times that we sold like 2 cars a day, and then there have been times that we've been selling 20 cars, 25 cars a day. So it depends. Honestly, like there's no fixed number of cars that we sell every day. That's the right actually answer. So can you tell me something? There is another question. All of a sudden it came to my mind that there are 3 ways to buy the car. Sometimes most of the people, especially Indian people, if they can afford it, they always buy. You know, they don't do finance and they don't do lease. So Mercedes especially, what do you think? What is your personal experience for the last 6 months? The people are interested to buy cash, or they go by lease, or the finance, you know, and how, you know, they do, you know, what are the some condition, if you can explain how you can get the lease and all those things. I think it like जैसे हम आपको mortgage चाहिए होता है घर का, या कोई भी कनाडा में रहने के लिए कुछ भी आपको चाहिए, तो they look for your credit score, right? As far as your credit scores, right, you can buy anything in Canada, right? Go for anything that you want. Personally, my opinion when it comes to buying cars is go for not the latest current models, go for a year which is like, you know, a year previous, पिछले साल का एक साल पीछे का ले लें, तो it gives you like a good package. That is what my personal opinion is. But then we do come across certain customers जो कि बिल्कुल car fanatics होते हैं, जिनको latest अभी गाड़ी आई भी नहीं है, पहले से बुक करा लेते हैं. तो it's individual preferences that matter. Girls are not into cars as such, तो वो finance lease जो भी उनको बेहतर लगेगा, certainly not cash, because obviously आपने monthly अपनी bills को जहन में रखते हुए करना होता है, हर चीज़ मैनेज करनी होती है accordingly. So you know, it depends on personal preferences, and then it depends on the financial managers how well and how good of a package that they make for you. कुछ लोगों को लीज सूट कर जाता है, कुछ को फाइनेंस करता है, so they go accordingly. तो इसका मतलब तो बड़ा क्लियर ही है भी, it depends upon family to family. Definitely. Whether they like need to need very करता है, finance, or they want to pay. Exactly. Like most of the people, they just want to pay. Exactly. And the second thing is clear, like when you said that we can get it the pre-owned, like 1 or 2 years old, or after lease जो 3 साल के बाद हो जाती है. बहुत से लोगों का वो इंटरेस्ट है कि 2-3 साल चलिए, कोई नथिंग इज रॉन्ग, सो वी विल सेव लिटिल बिट मोर मनी. तो लेकिन जैसे आपने बताया, कुछ लोगों का यही इंटरेस्ट है कि डे 1 इसमें 0 किलोमीटर होना चाहिए. Exactly. तो वो उनका अपना हर आदमी का अपना शौक है. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੜੀ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ. ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੰਗ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਰ ਗੁੱਡ ਫਾਰ ਹਰ ਗੁੱਡ ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਣ. ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਇਹ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਈ ਨਾਟ. ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਸ਼ੋ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਓਕੇ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਵਸ਼ੀ ਮੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਂਗ ਗਲਤ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਗੇ. ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ. ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਹੈ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਡੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, 2 ਡੋਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, SUV
ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਝੱਟ ਗੈਸ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜੀ 100 ਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨੈਸਟ ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 2 ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 100 ਵੀ ਵਿਕਦੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ नो ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ anything else about your experience in Canada, that what is the difference between Pakistan and Canada? So tell me 2 points plus and 2 minus point, whatever you feel over here. 2 plus points about Pakistan first. Obviously, traditionally हम वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वी आर मोर रिलीजियस फ्रीडम हमें वहाँ ज़्यादा है प्रैक्टिस करने की। आई मीन जितना 1 साल हो गया मैंने अजान नहीं सुनी जब तक मस्जिद नहीं जाते, राइट। बट बैक होम अजान का टाइम है तो गूंज एक आती है अजान की, राइट। देन ऑफ कोर्स होम इज़ वेयर योर हार्ट इज़। माई हार्ट इज़ स्टिल बैक होम बिकॉज माई फैमिली इज़ देयर। 2 plus points about Canada is are कि obviously opportunities यहाँ पे ज़्यादा हैं। पाकिस्तान रहते हुए बेंज में काम करने का सोच भी नहीं सकती थी, राइट। देन ऑफ कोर्स एजुकेशनली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज developed country है, still not underdeveloped like Pakistan. So it's a complete like a mini heaven on earth. आपको यहाँ पे मिल जाता है। So how you can call you never went to heaven nor you went to hell, so how you can call it's a mini heaven? So if for a layman, if you have to tell the difference, for example the roads, can you compare the roads structure, whether the roads here you can compare when you talk about obviously major highways, तो वहाँ पे भी अब बड़े शहरों की ठीक है, बट स्ट्रीट्स तक आपकी रोड्स यहाँ पे you have like स्नो की सिंपल एग्जांपल ले ले। अभी हमारे स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में स्नो स्टॉर्म आएगा महीने के लिए सब कुछ बंद हो जाएगा। यहाँ पे if you're having a snowstorm, everyone is at work unless it's like crazy and it's just 1 day off, right? तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है। पर मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि जो अल्लाह है, अलमाइटी है, जैसे भी उसने सृष्टि बनाई है तो वो ही इज कॉल्ड परफेक्ट, क्योंकि सोच समझ कर बनाई। अगर पाकिस्तान या इंडिया में भी अगर स्नो पड़ती तो पहली बात मैं ये कई बार बड़ी लाइट नोट पर कहता हूँ कि अगर स्नो पड़ती तो गवर्नमेंट कितना भी कहे कि स्नो में बाहर मत निकलो, स्नो को रिमूव कर दो, कोई रिमूव नहीं करेगा। ठीक। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर को देंगे कि साल्ट डाल दो, वो कहोगे हेरा फेरी है, हमारी करप्शन है, तो अगर उसने 100 ट्रक्स फेंकने हैं तो वो 10 फेंक देगा। तो फिर उसकी जो स्नो है वो आइस बन जाएगी। तो किसी को बोलो कि आइस पर मत जाओ, स्लिप हो जाओगे, दे डोंट केयर जब तक वो गिरते नहीं। जब गिर जाएंगे तो उठाने वाला कोई नहीं, एम्बुलेंस। जब कोई ले जाएगा हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने अपने पैसे लेने हैं। तो इसका मतलब जहाँ पर वो गरीब कंट्री है तो और भी गरीब हो जाए। इसलिए परमात्मा ने उनको जो मौसम है बड़ा अच्छा रखा है। और क्योंकि यहाँ पर पैसा है तो लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए इनका पैसा इधर भी खर्चवा देते हैं। इसी तरह एजुकेशन मेरे ख्याल से मच बेटर फैसिलिटी। और सबसे ज़्यादा तो बात यह है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पर आप फुली इंडिपेंडेंट हो, नोबडी कैन इंटरफियर इन योर प्राइवेट लाइफ। तो वहाँ पर तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पुलिस वाले जब मर्जी आपको पकड़ सकते हैं, इंडिया में पकड़ सकते हैं विदाउट एनी रीजन समटाइम। नहीं, आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक मे बी इफ यू टॉक अबाउट 20 years पहले, 20 years ago, शायद लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब होगा। वी डू हैव लाइक टेररिस्ट इश्यूज, लेकिन दैट इज़ जस्ट कन्फाइंड टू अ सर्टन एरिया, ठीक है। और वो भी आउटस्कर्ट्स का एरिया या वो बॉर्डर एरिया में भी विद पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ तक। मेजर सिटीज़ में आई थिंक इट्स बीन क्वाइट सम टाइम दैट वी हैव नॉट सीन एनी major disaster, right? But with the passage of time, I think when we talk about Islamabad and Lahore, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है। लाइक इफ़ आई रिमेंबर स्कूल में, ठीक है, तब हमें पुलिस वालों से बात करते हुए भी डर लगता था कि पता नहीं क्या चीज़ है, बट दे हैव एक्चुअली पुट इन एन एफर्ट इन रीबिल्डिंग देयर और रिक्रिएटिंग देयर इमेज, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लामाबाद। नाउ एज अ गर्ल, अगर मैं अकेली इस्लामाबाद में निकल रही हूँ और गॉड फॉरबिड अगर किसी ट्रबल में हूँ मैं, तो द फर्स्ट पर्सन दैट आई वुड कॉल
after my family or maybe before my family is a policeman, because now they have rebuilt their trust level with the community. और उसमें मीडिया बहुत सपोर्ट करती है आपकी, और पुलिस वाले खुद मतलब they are now ready to give back to the community and live up to their एक जो policeman का जो एक oath होता है. So I think with us it's improving now. Right, that's a good thing we heard from you, but still when you compare with Canada or America, still there's a difference, definitely. But क्योंकि global जो है हम एक दूसरे के close हो रहे हैं, तो अच्छी चीजें उधर भी जा रही हैं, Definitely. और बुरी चीजें जो उनकी हैं तो हम यहाँ पे आ रही हैं. तो ये तो नेचुरली बात है, पर फिर भी क्योंकि इसमें बेटर फैसिलिटी है कनाडा के लिए, कनाडा और अमेरिका, और कनाडा तो दुनिया का सबसे बेटर, जैसे आपने बोला कि जो मिनी पैराडाइज है, तो वो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ का लिविंग ऑफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी गुड. तो कुछ और आप माइनस पॉइंट बताओ, कनाडा में कौन से माइनस पॉइंट आपने नोट किए? माइनस पॉइंट यहाँ के क्या है? माइनस पॉइंट आई थिंक द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स to kids at a very lower age. इंडिया पाकिस्तान में भी है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ पे मुझे लगता है जैसे वीड लीगल हो गई है, मेरे लिए अभी भी इट्स लाइक अ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट हाउ कैन यू मेक इट लीगल. लाइक दे हैव देयर ओन रीजंस, दे आर प्रीटी मच जस्टिफाइड, बट फॉर अस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया, ठीक है, थोड़ा अभी मतलब अगर मैं अपने डैड को कॉल करूँ, डैड वीड लीगल है तो मैं स्मोक करने लगी हूँ, ठीक है, तो पापा को तो बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाना है, राइट? सो आई मीन देयर आर सर्टन थिंग्स, बट दैट इज अगेन द structure here, the society here is built that way. They have their pros and cons, and Pakistan, India have their pros and cons. So but for us, because we have been conditioned a certain way, हम brought up वहाँ की है, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब लगती हैं. Maybe 20 years from now, if I have my kids growing here, उनके लिए बहुत सी चीज़ें normal होंगी जो मैं उनको डांटा करूँगी, you don't do that. But again, it's society चीज़ें differ करती हैं. तो आप थोड़ा सा बताओगे कि आप what are your future plans? Future plans, I want to pursue with my PhD here, but let's see how it turns out to be. But उससे पहले मुझे थोड़ा सा यहाँ पे work experience चाहिए before I can go for a PhD. And yeah, that's pretty much it. And I am like one of the career-oriented females. I want to pursue with my career, and that's it. But before like you ask me more questions, थोड़ी सी अब मुझे curiosity हो रही है about your program and what you do. If you don't mind me asking you questions, let's switch positions. But for a minute. I'm asking you the simple question. Ask me the simple I will definitely. I'll just ask basic questions. I don't mind questions. even you ask anything. But so mind and body से related जो आपका program है, for youth like me, right? जो घर बार से बहुत दूर आ जाते हैं, ठीक है? तो आप spirituality का क्या message या कोई like some tips for us to stay connected to our spirituality, to stay connected to our religion, what would you suggest us what to do? The program itself, the first word of the program starts with mind. So we have to know that the जो human being है, that's a combination of three things. Actually most of 90% people say it's two things. Mind, जो एक body है हमारा physical substance है, और दूसरा soul कह सकते हैं. इन दोनों के कम्बिनेशन को हम बॉडी कहते हैं. लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें बताया गया कि नो, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स: माइंड, बॉडी एंड सोल. So mind and body and soul, three things are there. Only the body is a physical substance where you can touch, you can do surgery and all those things. But inside the body there is mind, and there is a mind as well as soul. So both are your spiritual substance. You can feel it, but you can't touch. You have to go within. When जैसे जीसस क्राइस्ट ने कुरान बाइबल में लिखा है कि if thy eye be single, thy whole body shall be full of light. कि आपको अंदर जाना पड़ेगा. जैसे कुरान में भी लिखा है जैसे कि क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए. अगर खुदा को मिलना है तो वो अंदर मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे बुल्ले शाह ने कहा ही है. तो अंदर जाने के लिए जब हम कैसे होते, डेथ क्या है कि स्लो एंड स्लो जो हमारी जो बॉडी है सुन्न होना शुरू हो जाती है. जब हमारी जहाँ पर सारी बॉडी सुन्न हो जाती है, तो जब थर्ड आई पर आ जाती है तो जहाँ से निकल कर वो चला जाता है, आदमी कहते हैं डेड हो गया. अब ये इस सर्कल को रिवर्ट करना है हमने कि जीते जी हमें कुछ, जब आदमी डेड हो जाएगा तो कोई नहीं बताता कि मैं खुदा को, अल्लाह को मिलकर आया हूँ कि नहीं मिलकर
रहा है, जीते जी हमने मिलना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन अ सिंपल वे आई कैन टेल यू व्हेन वी आर इन स्कूल्स आवर टीचर टोल्ड अस दैट वाटर व्हिच इज लिक्विड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नोबडी कैन बिलीव हाउ इट कैन पॉसिबल दैट इज अ लिक्विड, वी कैन सी इट, एंड हाउ कम दीज आर टू गैसेस। तो उसके लिए क्या करते थे हम कि लेबोरेटरी में जाते थे, पानी को गर्म करते थे, साइफन लगा देते थे, जो नाली होती है कच की, उसमें से जब गर्म करते थे दोनों जो गैसेज हैं वो ऑक्सीजन एक तरफ चली जाती, हाइड्रोजन एक तरफ, पानी खत्म हो जाता। तब हमें यकीन हो गया कि जो वाटर है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। जब उन दोनों को फिर इकट्ठा करते थे फिर लिक्विड बन जाता था। तो इसी क्यों विश्वास हुआ? क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया। इसी तरह अगर हम खुदा को मिलना चाहते हैं, परमात्मा को मिलना चाहते हैं, अलमाइटी को मिलना चाहते हैं, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू वर्क विद इन। व्हेन यू वर्क विद इन देन यू विल रियलाइज वन डे एंड यू विल बी मर्ज विद हिम। जैसे भी जितने भी हैं बुल्ले शाह हुए हैं, सूफी संत हुए हैं, और इंडिया में हुए हैं, दुनिया में जीसस क्राइस्ट हुए हैं, बुद्धा हुआ है, सोक्रेटिस हुआ है, मोहम्मद साहब हुए हैं, रामचंद्र हुए हैं, जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी मेहनत की। जब वो शरीर में होते मेहनत करके वो अंदर मिल जाते हैं तभी वो परमात्मा का रूप बन जाते हैं। सो इसी तरह हम रिलीजन को नहीं टच करते। रिलीजन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। कुछ बात कह दी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद फौरन हो जाएगा, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी को टच करते हैं। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सभी की, सभी धर्मों की, यू कैन कॉल इस्लाम, यू कैन कॉल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, ताओइज्म। क्योंकि मैंने आई डिड माई PhD इन कंपैरेटिव रिलीजन एंड आई रोट बुक्स, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी सभी की एक है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट वो सभी एक है और वो सभी लोग मानते हैं। इसलिए हमने इसको प्रोग्राम को स्पिरिचुअल की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं तो ज़्यादा हम टाइम हेल्थ इशू पर देते हैं, जब कभी और प्रोग्राम देते हैं। मेरे ख्याल में आई ट्राई टू एक्सप्लेन सिंपल लैंग्वेज। डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एलैबोरेट आपने किया। बट वन लास्ट क्वेश्चन, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन की एक सिंपल डेफिनेशन, लाइक सिंपल डिफरेंशिएशन, दोनों का एक लास्ट सिंपल डिफरेंस। मैं डेफिनेशन देना चाहता था पर उधर से मुझे इशारा हो रहा है कि टाइम इज ओवर, सो इवन इफ आई कैन गिव इट देन दे विल रैप। सो नेक्स्ट टाइम गो फॉर द बेस्ट, वी कैन डिस्कस दीस थिंग्स, द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन और एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स। सो वी कैन डिस्कस दीस थिंग्स इवन आफ्टर द शो, वी कैन डिस्कस। सो प्यारे दर्शकों, ਅਸੀਂ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।